ओम शांति। हम लोग सिस्टर डिनीस के जो मुरली नोट्स बुक है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15, धर्मा या धर्म। इन दिस मुरली बाबा raises the concept of dharma. I would like to say a bit about dharma. Usually it is translated as religion regardless of the context. However, the word dharma is vast, deep, and interesting. For example, he uses the word swadharma, and if you translate it as religion of the self, you cannot really tell what that is. Baba also speaks of Brahmin dharma. So, is this a religion or something else? Then there is the Adi Sanatan Devi Devta Dharma, and there is Hindu Dharma. Dharma actually means what you are, what it is. The Swadharma, the dharma of the self, is to be still. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, यही है स्वधर्म. So it is said in Hindi, swadharma, shant, stable state. The dharma of a soul is to be still. That means when the soul is in the soul world, it is in that dharma. Shanti has three meanings. One is peace, second is stillness, and the third is silence. We use the word disturbance in opposition to the word peace. As soon as a soul comes into a body and takes on matter, it comes into motion. The soul cannot avoid thinking, speaking, doing karma as long as all the necessary physical organs are in order. Now, he is preparing us to return to the dharma of the soul in the soul world. Also, the dharma of the soul is purity. When Shiv Baba comes onto this earth, he remains in a state of purity. Shiv Baba cannot change. This is a characteristic of God. He is immutable. All human souls are mutable. That means they are subject to change. तो ह्यूमन सोल्स में परिवर्तन आ जाता है, पर शिव बाबा में नहीं होता है. Connected with dharma, you also have the word dharna, and you also have the gunas. There is a difference between gun, meaning virtue, and the gunas, referring to the states of sato, rajo, and tamo. गुण माना वर्च्यू ऑफ द सोल, और गुनाज जो कहते हैं बाबा, उसको कहते हैं कि सतो रजो तमो, जो स्टेट्स जिन स्टेट्स से हम गुजरे हैं. देयर इज अ डिफरेंस बट दे आर ऑल्सो connected. Once a soul is on the earth, at the beginning of its time on earth, the dharna, the gun, the guna, and the dharma are all satopradhan. That means the virtues of the soul are pure and positive. The condition of the soul, the circumstances of the soul, all correspond to the golden age or a golden stage. The effect of time is to cause deterioration.
Simply because of time, the soul and matter, that is the state of the earth and nature, are in decline. They deteriorate. The lifespan of a body is initially quite long because the quality of matter is good. The body will last well for 150 years. The effect of time is combined with the effect of negative karma. Once we hit the second part of the cycle, and at that point the soul shifts to Rajo and Tamo. तो द्वापर से रजो और तमो स्टेज में चले जाते हैं. The shift from the golden age to the silver age is a shift from Sato Pradhan in the golden age to Sato in the silver age. In the copper age, it becomes Rajo, and then in the iron age, Tamo, and at the end of the iron age, Tamo Pradhan. The deterioration starts quite slowly and it accelerates as we reach the end. However, there is the confluence age, the time when Shiv Baba comes onto the earth and he reverses the effect of time. He is also called the purifier, which means that he neutralizes the attributes of negative karma. He does this by teaching souls to revert back to their swadharma, their original condition, which is to be still, at peace and quiet. और इसी कारण से हमारे सामने भिन्न भिन्न सिचुएशंस आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जिससे हम स्टिल रहना, पीस रहना और क्वाइट रहना सीखते हैं, अपना स्वधर्म के तरफ शिफ्ट होते हैं. The device he gives us to make that possible is the knowledge of drama. The knowledge of drama makes that possible by clarifying that you must be completely independent of whether something is good or not. The knowledge of drama says everything is as it should be, therefore we will call it good, and that includes the destruction. तो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हमें न्यूट्रल रहना है. When you come into the Brahmin Dharma, there can be confusion because in Hinduism they speak of the castes which are the Varn. The caste in terms of Shiv Baba's description refers to the quality of your action and consciousness. किस consciousness में हम हैं और कैसा एक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वर्ण में है, कौन से कास्ट का है. He says he is creating 3. तो कर्म बंधन से कर्म संबंध में ले आते हैं. तो कर्म संबंध में जब लाते हैं और स्किल सिखाते हैं, वो सब कहाँ काम आएगा? सतयुग में काम आएगा. वो परमधाम में कोई काम का नहीं है. इसीलिए सदगति गोल्डन एज में ही होता है. If we have been doing our dharna, maintaining our dharma and following Srimad, we will arrive in a good status in the beginning of the golden age. And that will be Sadgati. From that moment, there is decline. Great importance is given to the confluence age. It is a short period of time, approximately 100 years, and is the only time when you have a direct experience with God. It is the only time when you can rise. It is the only time when you can return to your original condition. यही एक समय है आगे बढ़ने का. सीढ़ी
चढ़ने का और फिर ओरिजिनल कंडीशन में पहुंचने का। इसलिए हमें ध्यान रहना चाहिए कि हम पुरुषार्थ करते रहें। द वर्ड परिवर्तन is usually translated as transformation. This implies that whatever you are is not okay. Transformation होना ज़रूरी है and you have to become something else. However, the accurate meaning of parivartan is that you return back to your original condition. Your contact with Shiv Baba through yoga, study and interaction causes you to revert back to your original condition. This is why the relationship with Shiv Baba when he is on this earth is extraordinary. क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ता है और वो संबंध जुड़ने के बाद ही हम उनके पास जो भी है वो वर्षे के रूप में रिसीव करते हैं। It indicates great fortune that you are a high level soul and also you receive great treasures. However, the accurate meaning of parivartan is that you return back to your original condition. Your contact with Shiv Baba through yoga, study and interaction causes you to revert back to your original condition. This is why the relationship with Shiv Baba when he is on the earth is extraordinary. It indicates great fortune that you are a high level soul and also you receive great treasures. However, at the same time, you have a responsibility to serve the world. सिर्फ खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, पूरा विश्व को भी परिवर्तन करने का, सेवा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा. In this Murli, Baba also defines what is an act of God and what is his occupation. क्योंकि हर बात में बाबा जब परिचय देते हैं अपना, तो बाबा ज़रूर मेंशन करते हैं कि बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है. Religions typically associate acts of God with natural calamities or that he took someone when they died. बच्चा दिया और बच्चा को ले गया. And that he let someone come when he took birth. Many Hindus think that he is responsible for everything that happens. But he says, no, my occupation is to establish the 3 dharmas. वो है एक ब्राह्मण धर्म, डेटी धर्म, क्षत्रिय धर्म. During the confluence age to teach and purify you. The purification of souls is linked to the destruction and includes a great deal of human suffering, natural calamities, and man's inhumanity to man through war, diseases, and other catastrophes. Once the original souls, the Adi Ratan, find again their original condition, it causes everything and everyone to break down and to get returned to their original condition. Therefore, we need massive spiritual power to pass through this process of restoration of the original condition. शांति. हाँ हितल बहन बोलिए. दीदी जैसे वर्ण की बात आई तो क्वेश्चन एक था कि जैसे ब्राह्मण से देवता तक पहुंचने के लिए बीच में फरिश्ता भी है, राइट? हाँ. तो फरिश्ता को भी वर्ण के उसको कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, फरिश्ता एक्चुअली ये ब्राह्मण स्टेट में जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो फरिश्ता स्टेट तक को पाते हैं. फरिश्ता माना
हल्कापन का स्थिति, और वो हल्कापन का स्थिति ब्राह्मण स्टेज में ही होता है, वो अलग से नहीं है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पर हमने नए क्या क्या सीखा है। एक धर्म क्या होता है, धर्म रिलीजन नहीं है, वो स्व का धर्म जो शांत स्वरूप है, आत्मा, स्टिलनेस, पीस, साइलेंस, वो मीन करता है। दूसरा वो वर्णों के बारे में, गुण गुण के बारे में, गुण है वर्च्यू, गुनाज है सतो रजो तमो में जो आते हैं, इसके बारे में भी हमने समझा है। और कैसे कैसे तीनों स्टेज से गुजरते हैं, और कैसे यहाँ के पुरुषार्थ के हिसाब से हमें पद मिलता है, इसके बारे में भी क्लैरिटी आया है। और अंत में जैसे दीदी ने कहा है कि उसके लिए कैसे पुरुषार्थ करना है, और शूद्र धर्म किसको कहते हैं, जो यहाँ पर ट्रेटर बनते हैं, जो कार्मिक बॉन्डेजेस में फंसे रहते हैं, नेगेटिव कर्मा करते रहते हैं, उनको शूद्र धर्म के लिए कहा। और अंत में जो और साथ में ये भी कहा है कि गति और सद्गति, गति माना मुक्ति धाम में जाना, और सद्गति जहाँ पर मैं अपना दैवी गुण धारण करके और वो सारे स्किल्स को सीख के जाते हैं, वो होता है सद्गति, गोल्डन एज में जाते हैं। और फाइनली जो डिस्ट्रक्शन होगा, वो डिस्ट्रक्शन में ही सारे सोल्स पहले तो आदि रतन कंप्लीट स्टेज ओरिजिनल कंडीशन में जाएंगे, और फिर सब ब्रेक डाउन होके फिर ओरिजिनल कंडीशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, है ना। ओम शांति।